Chemistry is not difficult. Chemistry is magic. Hello students. In this session we are going to start a new chapter, that is a 11th unit of this our PUC second year, that is alcohol, phenols and ethers. So these alcohol, phenols and ethers. So alcohols. The alcohols containing one or more hydroxyl groups directly attached to carbon of an aliphatic system. जो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, यहाँ पे वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू ए अलिफेटिक कार्बन को जो है ना अटैच रहता है उसको अल्कोहल्स बोलते हैं. While in phenols that one or more hydroxyl groups are attached to a carbon of an aromatic ring or aromatic system. Here generally we are taking the example of that benzene ring. तो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच है उसको बोलते हैं यहाँ पे फिनॉल्स. अगर अलिफेटिक सिस्टम में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उनको बोलते हैं यहाँ पे दोज आर द अल्कोहल्स. एंड ईथर्स आर नथिंग बट इन दिस दैट ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू द आइदर साइड ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. तो ऑक्सीजन आइदर साइड क्या रहता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच रहना, तो उस तरीके से जो कंपाउंड्स को बोलते हैं यहाँ पे ethers. Okay, now first we are dealing, that is the first a classification of alcohols and phenols. तो classification of alcohol phenols का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, deal that. The first यहाँ पे जो alcohol phenol that can be classified based on the number of a hydroxyl group present in the that molecules. Second classification based on that a hydroxyl group is attached to which type of that carbon, which type of the hybridized carbon, उसके ऊपर यहाँ पे हम जो है ना classification करते हैं. Let us see classification of alcohols and phenols. तो first ये जो alcohols and phenols are classified on the basis of number of hydroxyl group present in that particular molecules. These are three types. There is a monohydric, डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक. अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है वो मोनोहाइड्रिक होता है, अगर दो हाइड्रोक्साइड है तो डायहाइड्रिक होते हैं, एंड तीन जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं एज वेल एज द फेनॉल्स. जो फेनॉल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होता है दैट कंटेनिंग दैट कार्बन दैट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सो ये जो अल्कोहल्स are maybe monohydric, dihydric and trihydric. These monohydric and dihydric and trihydric alcohols as well as the phenols. So ये जो alcohols, that is the monohydric alcohols in which the hydroxyl group is attached to a carbon is sp3 hybridized carbon. वो जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है. और जो फेनॉल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होता है दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. सो अगेन दीज alcohols are maybe a primary, secondary and tertiary. If the hydroxyl group is attached to sp3 hybridized carbon is attached to one more alkyl group को अगर अटैच है that is known as primary. अगर the hydroxyl group is attached to that carbon, the carbon is bearing two more alkyl groups, that is known as a secondary. Look at that examples. And hydroxyl group is attached to that carbon, sp3 hybridized carbon, that is attached to three more alkyl groups. तीन alkyl groups को that allylic alcohols, that allylic alcohols is nothing but that hydroxyl group is attached to sp3 that carbon, allylic carbon,
that is next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट को क्या रहना है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहना. सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं. तो यहाँ पे जो प्राइमरी allylic alcohols में that carbon is attached to allylic carbon is attached to only one carbon linked to the one carbon, and allylic secondary allylic alcohol में जो है ना that carbon is attached to two alkyl groups, and tertiary जो है ना allylic alcohols में that carbon sp3 hybridized carbon is linked to the three more alkyl groups. Next is the benzylic alcohol. In this that benzylic alcohol, that hydroxyl group is attached to the that sp3 hybridized carbon next to the aromatic ring or the benzene ring. So these are the benzylic alcohols, or maybe three types: primary benzylic alcohol, secondary benzylic alcohol, and the tertiary benzylic alcohols. Look at these examples alternatively, we'll get all these things. तो देखो यहाँ पे जो है ना प्राइमरी. सो प्राइमरी में क्या होता है यहाँ पे, that primary benzylic alcohol in which the hydroxyl group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the benzene ring. तो next to the benzene ring को जो है ना यहाँ पे वो कार्बन को अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. Okay, so look at these examples, you will get all those such things. Look at this example. Can you identify the primary, secondary, tertiary alcohols? Look at these examples quick. Here A and B both are a secondary alcohols. दोनों A and B कौन सा है पे secondary है, secondary. And C and E, C and E कौन सा है, these are tertiary alcohols है, tertiary. Okay, look at these examples, you will get no. And D जो है ना यहाँ पे ये primary alcohol है. Primary यानी that is linked to the only one carbon, that hydroxyl group is attached to only one carbon. So this is that primary, secondary, tertiary. Next, vinylic alcohol. Vinylic alcohol क्या होता है यहाँ पे, the hydroxyl group is attached to sp2 hybridized carbon, that is a allylic, that is a vinylic carbon, that is carbon carbon double bond. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है that carbon is a vinylic carbon. तो विनाइलिक कार्बन को जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे विनाइलिक अल्कोहल. एंड दिस विनाइलिक जो कार्बन that is a sp2 hybridized carbon. Identify the examples. This type of the alcohols which are, this is the vinylic alcohol, B1 is the allylic alcohol.